Hello students, welcome back to Tuition Masters, and today we are here with doing your competency focused practice questions for your board exams for grade 10. So today social science we are going to do 50 important questions, 50 important competency based questions which is officially uploaded by CBSE and it is made by educational initiatives as well. So today we're going to practice all of them: history, geography, economics, civics, everything is there. So first we will start with our economics section. Okay, first we'll start with economics and then we will move forward with the others. All right, so let us start with our economics ke important question. Okay, so look over here. There are some MCQs, there are some normal questions, short answers. So this is basically competency, आपके values को check करने के लिए. Okay, अब देखो question says which of the following groups of people are likely to have the most conflicting developmental goals. सबसे ज्यादा conflicting, okay, जो goals होंगे किस group के लिए, okay, developmental goals: students, teachers, tribals and industrialists, small farmers, large farmer, municipal corporation and road construction. So what will be the correct answer? जब हम developmental goals की बात करते हैं तो basically developmental goals जैसे आपके sustainable developmental goals है, right? So tribals और industrialists के लिए बहुत tough हो जाता है. Why? Tribals are not aware कि क्या है क्या नहीं है, and industrialists they do lot of pollution and everything. So ये most conflicting हो जाता है developmental goals के लिए. Okay, so that's the answer. Now next is study the given data. आपको एक डेटा दिया गया है, जापान और जर्मनी का टोटल जीडीपी और जीडीपी पर कैपिटा. ठीक है, ये आपको दिया गया है. Despite having a higher total income in Germany, Japan has lower per capita income. What is the reason? देखो, if you see, जर्मनी में जीडीपी पर कैपिटा इज मोर देन जी ऑफ जापान, करेक्ट, और हायर टोटल इनकम है. ठीक है, जापान की जो टोटल जीडीपी है वो ज्यादा है जर्मनी से, पर जर्मनी की जीडीपी पर कैपिटा इज मोर देन ऑफ जापान, करेक्ट. सो व्हाट विल बी द रीजन? देखो, द मेन रीजन वुड बी अबाउट द पॉपुलेशन. ठीक है, किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है? सो हु हैज मोर पॉपुलेशन इज ऑब्वियसली जापान. जापान हैज अ बिगर पॉपुलेशन देन जर्मनी, सो हेंस टोटल इनकम जो है वो ऑब्वियसली पूरी कंट्री का मिला के ज्यादा होगा, करेक्ट, पर कैपिटा इनकम उसका कम हो जाएगा कंपेयर टू जर्मनी. जर्मनी में कम लोग है, लाइक कंपेयर टू जापान कम लोग है, सो टोटल जीडीपी कम है और पर कैपिटा उनकी इनकम ज्यादा रहती है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, विच आर द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ पब्लिक गुड. पब्लिक गुड, लोगों के लिए सोशल गुड, दैट वी कैन से, राइट? मेडिसिन, इंजेक्शंस, बुक्स, स्टेशनरी, हाउसेस, फर्नीचर, लॉ एंड ऑर्डर. पब्लिक गुड के लिए बेस्ट एग्जांपल विल बी व्हाट, दैट यू हैव टू से. पब्लिक गुड के लिए पब्लिक को जा जाके आप स्टेशनरी, फर्नीचर ये सब तो नहीं दोगे. वी प्रोवाइड लॉ एंड ऑर्डर. वी हैव आवर लॉयर्स, correct, we have lawyers, advocates, correct, we have lawyers, advocates, all of them help us to maintain proper good. So law and order will be the right answer. अब थोड़ी ना हर किसी को जा जाके हाउसेस फर्नीचर देने लगोगे, राइट? नाउ फोर्थ क्वेश्चन, we have not inherited the world from our forefathers. We have borrowed it from our children. I guess in our sample papers also हमने ये question, ये quote आया था, right? So see, this is basically telling that the world we have currently, resources we have, हमने हमारे forefathers से नहीं लिया है. We have borrowed it from our future. ठीक है, who said it? Mr. Lester Brown. Which of the following best displays this principle in action? इन एक्शंस हम क्या कर रहे थे? एज यू नो, हम सस्टेनेबिलिटी कर रहे, करेक्ट, सस्टेनेबल यूजेस, करेक्ट, सस्टेनेबिलिटी एज इन कि हम ऐसे यूज करेंगे कि आज के हमारी नीड्स भी पूरी हो जाए एंड द अपकमिंग जनरेशंस कैन आल्सो यूज द रिसोर्सेज, करेक्ट. दैट, सो व्हाट विल बी आंसर? यूजिंग अप करंट ऑल रिजर्व्स बिफोर बिगिनिंग टू एक्सप्लोर मोर. नो, दैट इज नॉट the correct principle. Now, moving all reserves under the sea.
टू अवॉइड ड्रिलिंग, वो तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम है. मूविंग टू ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स टू कंजर्व वर्ल्ड ऑयल रिजर्व्स, यस दैट इज एक्चुअली अ गुड स्टेप. इफ यू आर मूविंग टू ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स, ठीक है, अगर हम कोई और टाइप के फ्यूल्स करें तो ऑयल रिजर्व्स में जो फ्यूल रहेगा दैट विल बी एज इट इज. अगर वो एज इट इज रहा तो हमारे फ्यूचर के लिए वो सिक्योर है. ओके, नाउ next must. For a famous businessman's mall building project, a slum in Mumbai has been cleared and its people are displaced. With only a small payment for their land, there have been protests and public interest litigation. PIL has been filed in the court. What should the local government do? देखो, जब भी दिस इज अ वेरी कॉमन सिनेरियो, जब भी लोगों का ऐसा कुछ होता है वेर इन दे हैव टू सफर, और उनका कुछ प्रॉब्लम होता है वेर इन दे वांट टू बिल्ड समथिंग, बट जो पुअर पीपल है उनको डरा धमका के दे क्लियर द लैंड एंड गिव देम स्मॉल मनी. दिस इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. सो लोकल सुप्रीम कोर्ट तो उनके कोर्ट में फाइल कर दिया ना, लोकल गवर्नमेंट लेवल पे क्या कर सकते हैं हम, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई. ठीक है, लोकल गवर्नमेंट में आप कुछ नहीं कर सकते बिकॉज यू कैनॉट कैंसिल द लोकल गवर्नमेंट हो आप, आपके पास कैंसिलेशन की कोई राइट नहीं है. अरेस्ट प्रोटेस्टर्स फोर्सफुली रिमूव या वेट फॉर कोर्ट, आपको कोर्ट के जजमेंट का वेट करना पड़ेगा. अनटिल एंड अनलेस द कोर्ट डजंट से यू व्हाट टू डू, आप कुछ भी अपने से नहीं कर सकते. सो वंस द कोर्ट गिव्स इट्स हियरिंग देन ओनली वी कैन डू इट. ओके, now next one. Welfare economics is the branch of economics that seeks to evaluate economic policies in terms of the effects on the well-being of the community. ठीक है, सो वेलफेयर इकोनॉमिक्स मतलब कम्युनिटी के भले के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज, दैट्स इट. विच आर द फॉलोइंग इम्प्रूवमेंट इन टू योर लगे वुड नॉट अलाइन. देखो, नॉट उन्होंने स्पेसिफिकली इंक्रीज द साइज, हाँ, वुड नॉट अलाइन मतलब किस जो साथ में नहीं चलेगा विद दिस वी ऑफ वेलफेयर. वैक्सीनेटिंग द स्ट्रेट ऑफ, हाँ वो वेलबिंग हो रही है कम्युनिटी की. अब बिल्डिंग रैम्स एंड सो टू एड द डिसेबल पीपल के लिए रैम्स हैं ताकि वो इजीली ऊपर नीचे आ सके, यस दैट्स अ गुड थिंग. देन प्रोवाइडिंग अ सेफ्टी इक्विपमेंट टू द गार्बेज कलेक्टर्स, यस ताकि अगर उसमें कुछ कांच है डेंजरस चीजें तो दे डू नॉट गेट हर्ट. ओपनिंग अ पार्क फॉर पीपल हु कैन पे द मेंबरशिप फीस. देखो, हाउ इज दिस अ वेलफेयर, वेलफेयर तो है ही नहीं. जो मेंबरशिप भर सकते हैं उनके लिए पार्क, दूसरे क्या करें, बाहर से पार्क देख के जाएंगे वो लोग, तो उनके पास तो कुछ है ही नहीं ऑप्शन और करने का. सो दैट इज द नॉट करेक्ट फॉर वेलफेयर इकोनॉमिक्स. अब देखो नेक्स्ट हमारे पास शायद अभी नहीं है एमसीक्यूज. अब देखो, आर डेवलपमेंट इज द अर्थ डिस्ट्रक्शन, करेक्ट है ना, ये तो बात सही है. डू यू अग्री विद, ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स हैव ऑलवेज सेड, यू बिफोर आल्सो आई हैव सेड कि जब भी आपका एग्री डिसएग्री का आता है यू कैन डिसएग्री आल्सो, ठीक है, यू कैन डिसएग्री आल्सो एंड एग्री. बट ऐसे टॉपिक्स पे यू हैव टू, लाइक हिस्ट्री का टॉपिक हो गया, तो उस टॉपिक पे आप हमेशा एग्री करो तो अच्छा रहेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, a treaty of Vienna, was it harsh for the country or not harsh? टेल, सो यू कैन टेल और अब यू कैन एग्री कर दो आप, ठीक है. बट इसमें देखो आर्ट डेवलपमेंट और आप एग्री करते हो कि नहीं, इसमें आप एग्री भी कर सकते हो डिसएग्री भी कर सकते हो, बट इसमें मोस्टली आप एग्री करो क्योंकि और डेवलपमेंट कर रहे हो तो अर्थ का डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है, राइट. सो यू ऑलवेज हैव टू एग्री, मोस्टली आप बोर्ड्स एग्जाम में एग्री किया करो. ओके, हाउ, टू रीजंस क्या हो सकते हैं. फर्स्ट वन वी कैन से डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, करेक्ट, डिस्ट्रक्शन, ओ माय गॉड दिस इज टू बिग. ओके, पहली बात तो हो गई आपकी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, करेक्ट, habitat destruction. Second point can be the pollution. Correct, we have pollution, air pollution, water pollution, land pollution, है ना. पर अगर आप डिसएग्री करते हो इस पॉइंट से, ठीक है, आई टेल यू दैट आंसर ऑल्सो. अगर आप डिसएग्री करते हो कि नहीं ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, सो व्हाट यू कैन राइट, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, हम ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज यूज करते हैं, कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करते हैं, सो दैट विल ऑल्सो बी करेक्ट. बट मोस्टली एज आई सेड एग्री क्या करो स्टेटमेंट को. Now, people only need a good income to have a good standard of living, as income can buy everything. Is this statement correct? Give reason. No,
दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. यू विल से नो. इसमें एग्री डिसएग्री कर ही नहीं सकते. नो ही आंसर. बिकॉज पीपल सिर्फ गुड लिविंग नहीं चाहिए, उनको साथ में पब्लिक सर्विसेज भी तो चाहिए, राइट. देर आर सो मेनी पीपल इवन इन इंडिया जो उनके पास कार्स नहीं है, मोटर बाइक्स नहीं है, वो क्या यूज करते हैं, बस रेलवेज यूज करते हैं. ऑल उनकी इनकम अच्छी होती होगी, बट वो लोग पब्लिक सर्विसेज भी यूज करते हैं. सो हेंस only for living, that's not correct. Now, how does the Human Development Report HDR give a holistic review of the development? Human Development Report कैसे development का पूरा एक अच्छे से व्यू बताती है. So तीन मार्क हम तीन पॉइंट्स बताएंगे. First one is a per capita income, correct? Per capita income जैसे GDP का we showed no for Japan and Germany that way. Then education indicators, correct. Education indicators as in education कैसी हो रही है, students are studying here कि बाहर जाके पढ़ रहे हैं. And the last one is your health indicators, correct. Health indicators, this refers to कि health कितनी अच्छी है, hospitals ये सब कितने अच्छे. ओके. सो हाउ डज डू. तीन मार्क का, ठीक है, तीन मार्क का. यू राइट दिस पॉइंट, एक एक लाइन उनके बारे में लिख दोगे, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट. ओके. 10th question. Sex ratio refers to the number of females per thousand males in a population. Odisha has a better ratio of 972 than Madhya Pradesh, which has 919. All other indicators being equal, how does this affect HDI of the two states? Human Development Index कैसे करता है? ओडिशा में देर आर 972 फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स. मध्य प्रदेश में देर इज ओनली 919 फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स. ओडिशा में ज्यादा है, करेक्ट. सो हाउ डज इट अफेक्ट, क्या अफेक्ट करता है ह्यूमन डेवलपमेंट? नहीं. सो it does not affect. Okay, it does not affect the ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ठीक है, ये तो जस्ट नंबर ऑफ फीमेल्स पर थाउजेंड है, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स नहीं होगा, करेक्ट. इट इज नॉट यूज इन द कैलकुलेशंस. कैलकुलेशन हम नहीं लेते सेक्स रेशियो को, सो इट्स नॉट नीडेड. ओके. अब नेक्स्ट देखो. Study the table given below shows the income of the cities of two countries A and B. Assuming that they have only four citizens, ठीक है, that they have only four citizens, ठीक है. अब क्या हमको कितनी चार चीजें दी गई, हमको कैलकुलेशन करना है. कैलकुलेट द पर कैपिटा इनकम ऑफ बोथ द कंट्रीज. बोथ द कंट्रीज एवर बिका पर कैपिटा इनकम कितना है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई. ठीक है. सो लेट अस ट्राई टू डू दैट. सो पहली कंट्री का क्या, कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम. ठीक है, पहली कंट्री लेट्स से फॉर ए. क्या करोगे आप फॉर ए, व्हाट यू हैव टू डू, यू नो दैट आप सारी वैल्यूज को ऐड करोगे. 2000 प्लस 2400 प्लस 2400 प्लस 2700. ठीक है, ये सारे सिटीजन से इतना इतना कमाए. टोटल इसका ऐड करके डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 क्वांटिटीज है, राइट. सो यू हैव टू ऐड दिस. ठीक है, आपने सारी वैल्यूज को ऐड कर लिया. व्हेन यू ऐड ऑल दिस वैल्यू, व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट द आंसर एज समवेयर अराउंड 9500. Okay, now 9500 divided by 4 you will do. So what will get, you'll get 2375. So A के लिए the per capita income is 2375. ठीक है, 2375. अब कंट्री बी के लिए सिमिलरली आप ऐड करोगे 700 प्लस 40,000 प्लस 750 प्लस 710. ठीक है, उसको ऐड करोगे. टोटल इन सबको ऐड कर दिया आपने. इफ व्हेन यू ऐड इट यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली आई गेस 42,160. 42,160 you will get. Then you will divide it by 4 again. So you'll get it as 10,540. So this is your per capita income. अब विच कंट्री हैज हायर पर कैपिटा, सामने सामने दिख रहा है ऑब्वियसली बी हैज मोर पर कैपिटा इनकम. विच कंट्री हैज मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी. इक्विटेबल मतलब सारे मतलब ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल में कमा रहे. देखो 2000 2400 4000 2400 है ना, तो थोड़े थोड़े हंड्रेड्स का डिफरेंस है बस, है ना. सो कंट्री ए के पास इक्विटी है, बट बी में देखो किसी कोई 700 कमा रहा है, कोई 40,000 कमा रहा है, इट्स वेरिंग.
Is the answer for B and C the same? Give reason. No, हमने अभी just find out किया ना, no answer same नहीं है, because हाई पर कैपिटा इनकम कंट्री बी के पास है, बट दे हैव वाइड गैप बिटवीन रिच सिटीजन्स, ठीक है, लाइक सिटीजन टू ही इज रिच, ओके, दैट सिटीजन टू इज रिच, राइट, दूसरे उतने प्रॉफिटेबल नहीं है, राइट, दैट्स वाई. नेक्स्ट वन. The human development approach developed by Mahbub ul Haq is often framed in terms of whether people are able to be and do desirable things in life. The freedom of choice is central. Someone choosing to be hungry as during religious fasting is quite different from someone who is hungry because they cannot afford to buy food or in famine. Give an example to demonstrate the freedom of choice explained above. अब देखो, फ्रीडम ऑफ चॉइस, जैसे फ्रीडम ऑफ चॉइस क्या होता है कि एक तो हो गया हंगर का, जैसे आप रिलीजियसली फास्टिंग कर रहे हो तो आपकी चॉइस है वो, पर वर्सेस किसका, कि जो हंगर में, जो फैमाइन में है, वो खा नहीं पा रहे, उनको खाना है पर खा नहीं पा रहे, सो दैट इज अ फ्रीडम ऑफ चॉइस, राइट. सो उस फ्रीडम ऑफ चॉइस को यू हैव टू explain. So let us say that a person choosing not to go to higher education, ठीक है, हायर एजुकेशन नहीं करना और परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, ठीक है, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, उसको अपने मन से नहीं जाना, हाई स्कूल पढ़ना नहीं है, दे वांट टू डू आर्टिस्ट्री, वर्सेस अ गर्ल नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल, ठीक है, नॉट अलाउड टू go to school, like that, like your backward thinkings in your villages and everything, girls cannot go to school and everything. So ये दो कैसे, देखो ये फ्रीडम ऑफ चॉइस को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. एक गर्ल को अपने से ही स्कूल नहीं जाना, शी सेज दैट मुझे आर्ट्स करना है, मुझे आर्ट आर्ट पेंटिंग करनी है, आई डू नॉट वांट टू स्टडी फर्दर, हर चॉइस. वेर एज इन द अदर केस उनको वो लड़की को जाना है स्कूल, बट द पेरेंट्स आर फोर्सिंग कि नहीं जाना, यू आर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल, दैट वे. ओके, सो विद दिस हमारा जो इकोनॉमिक्स खत्म हुआ. नाउ वी आर मूविंग टू सेक्शन 2, दैट इज ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी पे मूव ऑन करते, चलो पहले तो एमसीक्यूज है, राइट. ओके, नाउ MCQs. Let us start with the first one. In village, grazing ground can hold up to 10 cows. ठीक है, grazing ground है, उसमें 10 cows तक capable है. Beyond this, it cannot replenish. 10 cows से जैसे 15-20 cows हो गया तो वो replenish नहीं हो पाएगा. The villagers did not pay attention to this situation. Okay, and 50 cows को लेके आ गए. अब in the ground, and as soon as the grazing ground ceased to exist. अब देखो 50 cows आ गए साथ में, ठीक है. So what kind of resource is being depleted? वो जो grazing ground है, how is it getting depleted? It's a community owned. कम्युनिटी ने ओन किया ग्रेजिंग लैंड, करेक्ट, और ग्रेजिंग उसमें बोला है कि 10 ही है पर वो 50 लेके आ गए, तो जो रिसोर्स डिप्लेट हुआ है दैट इज योर कम्युनिटी ओन रिसोर्स. Next one. Most of the alluvial soil formed in India is formed from the silt deposit by the Indo-Gangetic Brahmaputra River. गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स का, राइट, लाइक डेल्टा भी होता है, सुंदरबन डेल्टा. विच आर द फॉलोइंग रीजन्स कंटेन द पेरेंट रॉक दैट फॉर्म्स. पेरेंट, ये जो सिल्ट तो डिपॉजिट हुआ है ना, जो मेन पेरेंट रॉक होगा वो कहाँ पे होगा, करेक्ट. सो इफ यू सी ब्रह्मपुत्र कहाँ से ओरिजिनेट होके आता है, ब्रह्मपुत्र कम्स नियर हिमालयस, करेक्ट. गंगा कम्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर अगेन इन हिमालय, सो जो मेन पेरेंट रॉक होगा हिमालय में से ही मिलेगा. सो सेकंड वन इज हिमालयस. नेक्स्ट वन. एंड इंडियन स्टेट गवर्नमेंट वॉज टेकन ओवर बाय अ न्यू गवर्नमेंट, ठीक है, इंडिया की जो स्टेट थी इट वॉज टेकन ओवर बाय अ न्यू गवर्नमेंट. Which of the following actions by the government reduce land degradation? क्या action अगर government ले so that the land degradation is less? So setting up 3 new quarries for mining करने लगे near capital city, no, that's pollution. Next, next one will be granting permissions for cement factories near farmlands, farm में cement factories, you can understand obviously, no. Converting forest areas to greenhouse or creating separate grazing zones for livestock, yes, that will be good for land degradation. अगर आप कोई separate जगह बना दो only dedicated
to your क्रिएटिंग स्पेस फॉर ग्रेजिंग एंड ऑल्सो उनके लिए ईजी होगा, लैंड डिग्रेड नहीं होगा. ओके. नेक्स्ट, forest cover in India as of December 2019 is 25%. In the past decade, the government has tried to meet it of target of increasing forest cover to 33%. Although there have been efforts to increase the forest cover in past few years, forests are not thriving as they used to be. थोड़े से इंक्रीज हुए हैं बट इट्स नॉट एज फ्लरिशिंग जैसे पहले होते थे. व्हाट कुड बी द रीजन? सो मेन रीजन सॉइल इरोजन, लो क्वालिटी सॉइल, लैक ऑफ इरिगेशन, लो क्वालिटी सीड्स, कल्टिवेटिंग फूड ग्रेन्स विद इन. अब देखो, थ्राइविंग बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि वो बराबर उग नहीं लेते. इट इज बिकॉज दे आर नॉट यू लाइक द उनको जो सॉइल मिल रहा है शायद वो प्रॉपर ना हो. सो मे बी बिकॉज ऑफ सॉइल इरोजन एंड सॉइल क्वालिटी उनको सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली मिल नहीं पा रहे. दैट इज व्हाई दे आर नॉट एबल टू थ्राइव एज दे यूज्ड टू डू. ओके. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन. Uranium is found in Ladakh but has not been mined due to lack of funding. What kind of resources? देखो, यूरेनियम लद्दाख में मिलता है. ओके, इट इज देयर बट है, पर हमने उसको अभी तक यूज करना स्टार्ट नहीं किया. सो इट इज अ पोटेंशियल रिसोर्स. हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया उसको यूज करना. सो इट इज पोटेंशियल. Which of the following is not an important factor in formation of soil? Soil के formation में क्या important factor नहीं है? Atmospheric pressure obviously, running water में clog हो जाएगा उसमें. Chemical reaction से soil acidic या basic हो सकता है. Temperature will make the soil dry, wet, moderate, है ना? So yes, atmospheric pressure का कोई role नहीं होता. अब assertion reasoning करते हैं. Assertion. Soil formation and erosion go hand in hand, but sometimes this balance is disrupted by human activities. Okay, the formation of soil takes millions of years while soil erosion takes very much less time. Now what I want you to do is I will be creating a community quiz. Okay, quiz I will create, and in that it is your homework to answer. Okay, I won't say the answer right now, it is your homework. You have to, I will create a poll. In that poll you have to give me the answer what is right. Okay. Now नेक्स्ट चलते हैं एट्थ क्वेश्चन पे. हिस्टोरिकली कोलोनाइजिंग कंट्रीज टू एडवांटेज ऑफ इंडियाज रिच रिसोर्सेज, है ना, हमको बोलते थे गोल्डन, सोने की चिड़िया. करेक्ट. व्हाई वाज इंडिया नॉट एबल टू रेजिस्ट द एक्सप्लॉयटेशन? क्यों हम एक्सप्लॉयटेशन को रेजिस्ट नहीं कर पाए? दैट इज अ वेरी ओल्ड थिंग, है ना. हमारे पास उनके जैसे टेक्नोलॉजी नहीं थी. ब्रिटिशर्स के पास, कॉलोनाइजिंग कंट्रीज के पास बहुत सुपीरियर टेक्नोलॉजी, ज़्यादा प्लान्स थे. हमारे पास उतना नहीं था उनके साथ compete करने के लिए. ओके. नाउ the inequitable distribution of access to resources had disrupted world peace by dividing society into what? ठीक है. वर्ल्ड पीस को कैसे डिसरप्ट किया? दैट ऑल्सो एक्सेस की वजह से. सो बिकॉज इनटू हैव्स एंड हैव नॉट्स, किसी के पास है और किसी के पास नहीं है. दैट विल बी द करेक्ट आंसर, राइट. कि किसी के पास तो है, रिसोर्सेज है, वो एक्सेस कर पाते हैं, बट दूसरे जो गरीब है उनके पास है ही नहीं करने के लिए. ओके. नाउ अब देखो, नेक्स्ट अभी हमारे आते हैं ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. रिवर वैली इन इंडिया इज बीइंग डेवलप्ड इनटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. रिवर वैली है इंडिया में, उसको भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. स्टेट द 3 स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग. अब क्या स्टेप्स करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी. करेक्ट. आई विल राइट हियर इन शॉर्ट. करेक्ट. फर्स्ट वन, अमाउंट ऑफ एनर्जी. ठीक है, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी. देन प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, और कैसे हम उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे उसकी डेवलपमेंट होगी ताकि जो उधर लोग रह रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो. करेक्ट. एंड थर्ड पॉइंट कैन बी द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन टू ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान्स अक्रॉस द कंट्री. सो कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ये कर रहा है और ओवरऑल कंट्री में कितनी कंट्रीब्यूशन करेगा, दैट ऑल्सो नीड टू बी mentioned. ओके. सो ये 3 स्टेप्स होंगे रिसोर्स प्लानिंग. गिव एन एग्जांपल ऑफ अर्बन कम्युनिटी ओन्ड. अर्बन में करेक्ट. सो अर्बन में वी हैव पार्क्स. Correct. We have parks. We have cemeteries. Correct. We have cemeteries, burial grounds. Then we have public beaches. Correct. We have public beaches as well.
Then what else we have? We have picnics, etc. एक ही करण लिखना, so you can write one of it. Okay. Next one. Aaron gave his friends three clues about the soil. ठीक है. It is found in Maharashtra, largest producer of cotton. That's it. आपको second point पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. Cotton आ गया, so obviously it is your black soil. Correct. Cotton आ गया, महाराष्ट्र आ गया. That means it is definitely black soil itself. Next, 13th. It's surely our responsibility to do everything within our power to create a planet that provides a home, not just for us, but for all life on Earth, said by Sir David Attenborough. What is meant by the above quote explained in 2 points? क्या हमारी क्या हो रहा है? हमको फर्स्ट पॉइंट कैन बी रिटर्न एज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. करेक्ट. कंजर्व द रिसोर्सेज. करेक्ट. एंड अर्थ के रिसोर्सेज, एंड we should conserve for all species. Correct. For all species on the planet, not just for human being, all the species. How does this quote align with sustainable development? Sustainable development से कैसे related है? Now basically we know that the quote is talking about planet that does not compromise the needs of the life on earth. So दूसरी lives के भी compromise नहीं कर रहे हम. Correct. So developmental sustainable development पे ये काम कर रहा है, because development we are not harming the environment, and we are even not compromising the future. Okay. Now, give two examples of resource conservation practices in our daily lives that make way for sustainable development. ठीक है. So let us say solar energy. Correct. Solar energy. एक और एनर्जी ऐसी है, दैट इज योर विंड एनर्जी. करेक्ट. देन वी कैन राइट योर रेन वाटर हार्वेस्टिंग. करेक्ट. वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, राइट. Next one. We need sustainable development because resource exploitation is leading to inequality. Explain the inequity of the resources in 2 points. ठीक है. कैसे हम कर रहे हैं? We can say resources in few hands, accumulation of resources in few hands. करेक्ट. इन फ्यू है, मतलब कोई कोई लोगों के पास ये रिसोर्सेज दूसरों के पास नहीं, सो इनइक्वालिटी है. करेक्ट. इवन division of society, जैसे we did in the MCQ, have and have nots में divide है society, right? That's why. Now, name one international summit that discuss sustainable development goals. बहुत सारे हैं. Correct. Like you can write the Kyoto Protocol. Correct. You can write about the Kyoto Protocol for the, I guess, chlorofluorocarbons, right? Yes, Protocol of 1997. बहुत सारे हैं. Like the Rio de Janeiro Earth Summit. Then आपका था Johannesburg Summit, right? ऐसे बहुत सारे थे. You can write one of this. Now, एक मैप दिया गया about the forest, not forest, soil type दिया गया है. Now, observe the regions where laterite soil is present. Using the map, explains similarities between the areas that have this. अब देखो laterite soil किधर किधर है? If you look carefully, this is your laterite soil. All this much part, I guess, yeah, this is your laterite soil. ये आपका laterite soil है. So क्या है? Basically it is coastal. ये देखो यहाँ पे भी laterite है. So this is mostly coastal climate, है ना? कोस्टल क्लाइमेट सिमिलैरिटी है, सब कोस्ट्स पे है. देन ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड्स है. देन हैवी रेनफॉल ऑल्सो. करेक्ट. हैवी रेनफॉल की वजह से लीचिंग भी होती है. हैवी रेनफॉल एंड ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई रीजन्स है. ठीक है. सो विद दिस हमने हमारा सेक्शन 2 ज्योग्राफी का भी कंप्लीट कर लिया है. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर हिस्ट्री. ठीक है. हिस्ट्री करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन. What impact the storming of Bastille by the French have on Europe? इम्पैक्ट क्या था ऑन बैस्टल को स्टॉर्म किया तो इन फ्रेंच में, तो यूरोप में क्या हुआ? सो आंसर, पीपल अक्रॉस यूरोप गॉट इंस्पायर्ड टू फाइट अगेंस्ट द रूल ऑफ मोनार्क. हाँ, यही सबसे करेक्ट आंसर है. क्यों बैस्टल को स्टॉर्म किया? क्योंकि इट शोड द डिस्पोटिक पावर्स ऑफ द मोनार्क, है ना. सो अपने रूल्स को उनको ओवरथ्रो करने के लिए दे थॉट दैट दिस इज द राइट आइडिया, इंस्पिरेशन. अब अगेन एक असर्शन रीजनिंग करते हैं. नेपोलियंस फ्रेंच आर्मी बॉट डेमोक्रेसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस अक्रॉस यूरोप बाय
1804. No, this is actually a false statement. ये false है, right? Oh, he did not bring democracy. उसने तो सब उल्टा कर दिया था, right? Napoleon simplified administrative divisions, abolished feudal right, and freed peasants from serfdom and minorities. Yes, वो statement correct. उसने ये अच्छाई की थी, but democracy वो नहीं लाया था. So yes, A is false, but R is true. अब इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, स्प्रेड ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बताया गया है. विच आर द फॉलोइंग इज द फॉल्स बेस्ड ऑन द अबव मैप. आपको बताने की क्या फॉल्स स्टेटमेंट है. फर्स्ट, इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ नहीं, इंग्लैंड में तो नहीं हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था. नेशंस फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप वर इंडस्ट्रियलाइज्ड बाय लेट 19th नहीं. ऑल यूरोपियन नेशंस रीप द बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एट द सेम टाइम. यस, यू कैन से दैट. ऑल यूरोपियन नेशंस, देखो ना, सारे यूरोपियन नेशन ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े डेकेड्स के डिफरेंस में सबने फायदा उठा लिया था ऑफ द रेवोल्यूशन. करेक्ट. So yes, 3 is your answer. Next, question number 4. Again, assertion reasoning. Many artists and poets within Europe made paintings and wrote poems to highlight the plight of Greeks under the Ottoman Empire. Correct? Ottoman Empire के peasants के लिए उन्होंने लिखा था. Then, sorry, Greeks. Many Europeans had sympathies for ancient Greek culture and supported the work. That is also true, है ना. So अब explanation है कि नहीं, उनके पास उनको sympathy थी. करेक्ट, उनको सिंपैथी थी उनके लिए, दैट्स व्हाई बहुत फेमस हुए थे एंड मेनी आर्टिस्ट ने लिखा था. सो हेंस इट इज एक्सप्लेनिंग. Omar wanted to learn more about Ottoman Empire. Which country should be very easy, very very. Ottoman Empire क्या है, फ्रांस ऑस्ट्रिया तो नहीं जाएंगे हम. ऑब्वियसली हमारे पास बल्गेरिया बचा है, बल्गेरिया में जाके पढ़ लो अबाउट दी Ottoman Empire. Next, who would Rico be fighting against if he was a volunteer in the Red Army, which was led by Garibaldi in 1867? So कौन से troop में होता था? He would be in the Papal troop. Correct? He would be in the Papal troop. Next one. One key feature of constitutional monarchy. See, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में लिमिट्स द पावर. करेक्ट, वो लिमिट करता है, लिमिट्स द पावर ऑफ द मोनार्क. एक कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें रिटन रूल्स होते हैं, उस रूल के हिसाब से ही किंग रूल कर सकते हैं कंट्री को. तो जो पावर है वो लिमिट हो जाती है. ओके. Oliver Kahn ran a business that spread across Germany, Dutch Republic, and Italy when the Napoleonic Code was implemented. 5 key changes Mr. Khan experienced. Write them. What could it be? 5 changes क्या क्या हो सकते हैं? वन करेंसी, है ना, सेम यूनिट ऑफ करेंसी उसको यूज करनी पड़ेगी ऑल ओवर, वेर एवर इटली में है कि जर्मनी में है. वन करेंसी. देन एबल टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन, है ना, ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव हो गया था. करेक्ट, ट्रांसपोर्टिंग, transportation. Then what else we can write about? A uniform law भी बराबर था, if we need any help, करें as per Napoleonic law code. And he was able to use standardized weights and measures across the countries. जो weights और measure होंगे वो common होंगे. And he did not have to pay taxes. कोई tax नहीं pay करना पड़ता था to aristocrats. So you can write in little bit detail. State any two characteristics of the utopian society. Any two characteristics of utopian society. We can say they are truly free to think independently. Correct? Free thinking. Free thinking. They can think freely, independently, whatever they want to. And outside world का कोई fear नहीं है. No fear of outside. Like, you know, like socialist republic, right? No fear of outside world. That is your utopian society. French revolutionaries introduced the French flag as a measure to create a sense of collective identity amongst the French people. Name the 2 nation states that had adopted a national flag for their respective nations also. So it was, you can write, there are few. We have our Switzerland. Correct. We have Switzerland. After Switzerland, we also have our USA, United States of America, and we even have Greece. So these countries also adopted a national flag for their nations. Okay. Next,
Folk dances and their association with national identity have made their vehicles for government propaganda. In Nazi Germany in the 1930s and 1940s, government used charming folk dances to embody the mystique of idyllic Germany. Similarly, in the present scenario, certain governments, for example, those of North Korea and China, have used dance in mass performance to symbolize the people's support. Now, we have to say give a similar example of how dance forms helped in developing nations. ठीक है, dance forms कैसे help करते थे, how? So you can say that in आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, एग्जाम्पल देना है. सो वी कैन टॉक अबाउट पोलैंड. करेक्ट, पोलैंड के बारे में बात कर सकते हैं, वेर इन फोक डांसेस वर यूज्ड टू यूनाइट पीपल. करेक्ट. एंड एक पॉलिश मैन था, हिज नेम वाज कैरोल, राइट, कैरोल करपेंस्की. He also used pole dances to Polonize and mazurka to unite the people of Poland को साथ मिलाने के लिए, right? Now, explain five challenges which the Silesian weavers faced in 1845 when the contractor reduced their payments. ठीक है, they were forced into poverty. Correct, you can say poverty was the main thing. उनके पैसे कम हो गए थे. Correct, poverty. उसके बाद unemployment. हम्म, अनएम्प्लॉयमेंट, लोग छोड़ने लगे कि नहीं हम काम ही नहीं करेंगे, और जो थोड़े बहुत पैसे मिल रहे थे वो भी नहीं मिल रहे थे. अनएम्प्लॉयमेंट. देन famines, शॉर्ट famines, you can say खाने नहीं मिल रहा था, खाना नहीं था. देन we can even say poor health conditions. Correct, poor health. And what will be the last outcome? You can say that Silesian king ने क्या किया था? He ensured continuous inaction from the Silesian king against the contractor, ensured continuous exploitation of weavers in the hand of contractors. So that you can write. Now, write any five expectations which the monarch of Bourbon dynasty would have had from the French people after he was restored to power. So, क्या क्या एक्सपेक्ट होते, फर्स्ट कैथोलिक चर्च को फॉलो करने के लिए. करेक्ट, कैथोलिक चर्च को फॉलो करने के लिए, राइट, दैट वुड बी द मेजर थिंग. उसके बाद आर्ट्स को प्रमोट करने के लिए बुक्स, प्लेज, सॉन्ग्स एक्सेट्रा. ठीक है. फिर टू वर्क इन गवर्नमेंट आर्मी, आर्मी में काम करने के लिए फ्रीली. Also, to discourage friends, family, and even criticizing the government. Correct. No criticism. Correct. And last one you can write about is to not criticize any law which is implemented by the government, like censorship. censorship पे भी कोई आप वो नहीं कर सकते कि नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए ये, this is not right. So these things would be accepted, like the expected by the king. ओके. नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट हमारे पास है हमारा सिविक्स का, पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस करते हैं सेक्शन 4 में से. लास्ट सेक्शन है ये. नाउ, क्वेश्चन 1. Proportionality is an important practice in power sharing, which includes proportional allocation of jobs, representation, and participation by ethnic group leaders. Which are the following is example of proportionality? Proportionality कहाँ पे आ रही है? So if you see, आप थर्ड ऑप्शन में देखो तो आपको ऑप्शन परसेंटेज दिख रहे हैं कि अराउंड 24 ऑफ टोटल सीट्स इन लोकसभा रिजर्व फॉर मेंबर्स बिलोंग टू SC ST. सो उनके लिए भी प्रोपोर्शनैलिटी दिखाई गई है कि आप भी प्रोपोर्शनल हो, आप भी, एज एन एग्जाम्पल हम ले रहे हैं. नेक्स्ट वन, assertion reasoning. Power sharing can only emerge in democratic setup. Is it true that only in a democratic setup there can be power sharing? So that is a false statement. Democratic mein it's not necessary. In an ideal democracy, political power is distributed among as many people as possible. Yes, that is a true statement. So answer will be A is false, R is true. अब एक पैसेज दिया गया है. ओके, आई वॉन्ट यू गाइज टू रीड इट. आई ऑलरेडी रेड इट. जस्ट यू गाइज जस्ट आई यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड रीड द पैराग्राफ. ओके, you guys can read the paragraph about orthodox, the croats, and the Dayton agreement was signed. Okay, all this is a paragraph given. I'm slowly scrolling down, you can read it. Okay, now the question, what was the main reason for the conflict in the Bosnian territory? If you read it, it was of the ethnic and religious basis. Okay, ethnic and religious basis. Next, mention two forms of power sharing.
which were proposed. First was territorial power sharing by territorial basis, and next was political power sharing, okay, in the government. Next, mention one example each for the two forms of power sharing which was adopted. Territorial के लिए the we will talk about ethnically, correct? Ethnics were separated, and political के लिए we can use proportionality, correct? Proportionality was built in the government. Mention one positive effect that power sharing had on the conflict in the Bosnian territory. क्या एक पॉजिटिव था? रिड्यूस्ड वायलेंस, करेक्ट? पावर शेयरिंग हुई तो वायलेंस रिड्यूस, जो कम माइनॉरिटी में थे उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई. Read the following lines from an article. The rise of majoritarianism in recent years may weaken power sharing in India. Indian democracy. There is a need for constitutional provisions to protect minority. Which type of power sharing can you see over here? This is for moral reasons. Correct? You can write a moral reason over here because minority should be protected. They do not have rights like that. State whether the following statement is true or false. Power sharing is effective only for small countries like Belgium. Is that true? No. This is a totally false statement. Why only small countries? Every country we can do it, right? Given statement is false. Why? Because power sharing is effective in large and diverse countries also. Large and diversity, like best example, India. In large and diverse countries as well, power sharing is there. One of the remedies that is suggested for societies struggling with civil conflict are power sharing. This, that, okay. Now, what we have to find, you guys can read this. Okay, this is given. You guys can read this. Question is, Bangaluru's Jalapotion Trust. Okay, Bangaluru's Jalapotion Trust, Citizens Collective collaborates with the municipal corporation of Bangalore to conserve and revive a lake in the city. Okay. Now, in Maharashtra, every level of government was given a stake in taking action against the spread of coronavirus. Our question is, state the type of power sharing arrangement that each of the two examples represent. Acha, previous question ka what was the question? Ah, okay, see here. For this one, this is basically give an example each for the two ways of maintaining peaceful, providing minimum benefits to each party to cooperate with collective decisions. Okay. और इस वाले का आंसर लेट्स डू. स्टेट द टाइप ऑफ पावर शेयरिंग. इसमें क्या हो रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही है, एवरीथिंग इज गिवन, राइट? सो वी कैन से दैट दिस इज बिटवीन प्रेशर ग्रुप्स एंड पीपल इन पावर. ठीक है, पीपल in power, they are able to share it, okay, and even at different levels of government. In above example, who is sharing power with whom? Local governance body, that was what, BBMP, that's only given, right? Huh, वो power sharing कर रही है with the pressure groups. Which kind of government are such power sharing arrangements possible? ऑब्वियसली ऐसी पावर शेयरिंग ऑब्वियसली आपको डेमोक्रेसी में ही मिलेगी और कहीं पे नहीं मिलती. सो विद दिस स्टूडेंट्स वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग. विद दिस हमने पूरे के पूरे 50 इंपॉर्टेंट competency based questions कंप्लीट कर ली है. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वंस अगेन. मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, share it with your friends, subscribe to the channel. Make sure to attend the homework section, homework question I gave. I'll create a poll soon. I'll be seeing you in the next video. Till then, take care and good.